तो गाइज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। शुरुआत में जैसे हमने बोला था कि वील बी डूइंग अ क्वेश्चन दैट वाज प्राइमा फेसाई वेरी डिफिकल्ट। उस क्वेश्चन को देखने के बाद मेनी स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि सर दैट दिस क्वेश्चन वाज एन इम्पॉसिबल क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड आउट ऑफ द ब्लू। पता नहीं कहां से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया। एंड उस क्वेश्चन को देखकर काफी सारे स्टूडेंट्स डर गए थे। लेकिन अब तक गाइज वी हैव used compatibility test in many questions, and we have understood the basic operation of compatibility test so far. Let's try to apply our learnings from this session in a real question asked in 2023 paper. Fine. And the question is this, Ranjit, you can read it now. Yes. इसको Consider छोड़ो the कहीं थोड़ा। okay. हाँ, अब पढ़ो रंजीत। Consider the following statements. Statement 1, 7th August is declared as the National Handloom Day. Statement 2, it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. Which one of the following is correct in respect of the above statements? ठीक है गाइज, इस क्वेश्चन के लिए मैं ज्यादा टाइम दूंगा, 45 सेकेंड्स। सोचो। those watching it live on YouTube, guys, keep answering in the chat box. ख्याति मिश्रा ने लेट ज्वाइन किया है। दीपक, श्रमिष्ठा, कृष्णा, अमरनाथ, अनमोल, आलोक, राहुल प्रसाद, स्ट्रेट पाथ, प्राची, दीपक, सुधांशु, कूल फ्लैश, मिस्टर भारद्वाज, अच्छा नाम है। कम ऑन गाइस, बी क्विक। ऑलराइट गाइस, कॉल आउट योर नेम्स एंड गिव मी योर आंसर्स। सर क्षितिज ऑप्शन ए। क्षितिज Ranjit Alpha. ए, कल्याणकारिणी कल्याणकारिणी अल्फा, कैलाश ए, सहर्षा तेजा अल्फा, ए, तेजा ए सर नमन ए, नमन अल्फा, फातिमा ये सर। फातिमा अल्फा। फातिमा, थोड़ा तुम डर डर के आंसर कर रही हो। आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट ऑप्शन ए? Yes, I'm confident, sir. ओके। अदर्स Ranjit अदर्स Alpha. Ranjit Alpha. जयश्री, रंजीत अल्फा, अमोद अल्फा। अमोद अल्फा। ओके। चैट बॉक्स में भी like majority of students are answering alpha only. Fine. Guys, before I come to the correct answer, tell me, आप लोगों में से कोई ऐसा है who knew the answer for sure? पक्के तौर पर नो इसका आंसर सर, पता था? ऐसा कोई है? No, sir. No, sir. sir. नहीं पता था? Now that's a very, अच्छा, क्षितिज को पता था। क्षितिज को पता था। नहीं सर, वो स्वदेशी मूवमेंट का डेट और ईयर मालूम था सर, इसलिए रिलेट कर पाया ऊपर। अच्छा ठीक है, क्षितिज को कुछ कुछ आइडिया था लेकिन पक्के तौर पर आंसर नहीं पता था। अदरवाइज एवरीवन इन दिस डिस्कशन, बी इट ऑन जूम और बी इट ऑन यूट्यूब, दोज वाचिंग इट ऑन यूट्यूब लाइव, किसी को इसका आंसर पक्के तौर पर नहीं पता था whether 7th of August is declared as National Handloom Day or it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. किसी को नहीं पता था। But the interesting aspect of this question is everyone has answered it correctly. This was asked by UPSC in 2023 and prima facie students का मानना ये था कि this question was very difficult, but everyone among you answered it correctly. If I ask you, क्षितिज और कल्याणकारिणी, दोनों बताओ guys, how did you mark alpha? Sir, I related that question of Swadeshi movement, which was launched. I just knew the idea that it was launched on August month. ठीक है, And, ब्रॉड आइडिया था क्षितिज के yes, पास, broad ब्रॉड idea. आइडिया था। Yeah. कल्याणकारिणी तुम बताओ। yes, the same here. That August month was that Swadeshi movement started, and there was no reason to eliminate option A because National Handloom Day, handloom related to Swadeshi, घर की चीजें, मतलब अपने देश की चीजें, handloom, craft industry. फाइन, गॉट योर पॉइंट। ललिता, तुम बताओ कैसे मार्क किया अल्फा? सर सेम दैट आई हैड दिस आइडिया कि अगस्त में और 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड, सो आई रिलेटेड दिस नेशनल हैंडलूम डे बिकॉज उस समय हम सब ऐसा नेशनल कॉलेजेस और ये सब स्टार्ट कर रहे थे Very एंड good. और Very good, इंडस्ट्रीज भी बहुत शुरू हुई थी उस टाइम पर। Very good. सो आई रिलेटेड Just to rephrase what Lalita is saying, guys, just to rephrase what Lalita is saying, she knew the year and month. ठीक है, अगस्त 1905 में ये चीज हुई थी। And the more important thing that she said कि during the Swadeshi movement we were emphasizing more on Indian stuff
Now, be it handloom, be it national education, be it national products, everything was national, locally made, locally available. We know this, everyone knows this. Swadeshi movement के बारे में हम सबने पढ़ रखा है, right? This fact everyone knows. Now, when we have these two statements, assume that we are sitting in the examination hall and we are faced with this question. 7th August को और 7th August is declared as the National Handloom Day. हमको नहीं पता, हमको बिल्कुल नहीं पता. Statement 2. It was in 1905 that Swadeshi movement was launched on the same day. Guys, हमको ये नहीं पता कि स्वदेशी मूवमेंट exactly 7th को हुई थी. Was it on 7th of August or 17th of August or 27th of August? We are not sure. But we are definitely sure that it was launched in 1905 and probably some of you know the month. August में हुई थी. Exact date किसी को नहीं पता. Probably कुछ लोगों को पता होगी, लेकिन majority लोगों को exact date नहीं पता. Can we say, guys, statement 1 and statement 2 are compatible? Because if Swadeshi movement was launched on a particular date, here it's saying 7th of August, be it any particular date. If Swadeshi movement that emphasized so much on national production, national cloth, handloom, khadi, if it was launched on 7th of August, it is highly likely that we can celebrate that particular day as National Handloom Day. Can we say so, guys? Make sense? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right? Because Swadeshi movement was intimately linked with handloom, khadi, okay, national products. So we are not sure of the correct answer, but statement 1 and statement 2 are compatible. Compatibility दिख रही है ललिता दोनों statements में? Yes, sir. To reiterate myself very briefly, Swadeshi movement was launched on a particular date, and if it was 7th of August as said in statement 1, it is likely that National Handloom Day can be commemorated on that particular day because Swadeshi movement was intimately linked with handloom, khadi and other stuff. So statement 1, 7th of August is declared as the National Handloom Day. And statement 2, it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. Option A is correct. Both statement 1 and statement 2 are correct. And statement 2 is the correct explanation for statement 1. Fine. So, सर हाँ, रंजीत, रंजीत बस बताओ. एक पॉइंट बस इंग्लिश का मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा. जैसे सर आपने बोला कि ऐसे ऐसे होगा, अगर हमने ये देख लिया उसके बाद एक इसको सप्लीमेंट भी करेगा. अगर हम इंग्लिश देखें तो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा ऑन द सेम डे, इसका मतलब फर्स्ट का कंटिन्यूएशन ही है. अगर हम ऐसे पढ़ेंगे कि 7th अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे बिकॉज इट वाज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च ऑन द सेम डे. यहाँ पे अलग डेट नहीं दिया हुआ. अंडरस्टूड. रंजीत, देखो तुम्हारी जो थॉट प्रोसेस है ना, दिस कम्स आफ्टर रिफाइनमेंट. You Yes, have been practicing since the last year. Yes, sir. Yes, sir. You have this refinement in your thought process. सर उसी का तो सर पूरा बेनिफिट हुआ कि सर इतना क्वेश्चंस कर पाए सर इस बार प्रीलिम्स में. Okay, fine. Guys, is there any doubt with respect to this question? कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, No sir. doubt. Chat box में guys, किसी को डाउट है with respect to this question? Fine, guys. So in this session, we emphasized majorly on compatibility test and also on feasibility test. Overall, we solved 12 questions. We solved some questions asked by UPSC in the previous years. We did some practice questions. And at the end, as was the claim in the beginning, we'll be doing a PYQ from 2023. And you'll have that confidence to solve it correctly. हमने वो किया and you were able to solve it correctly. So it is a good thing, guys. It's good to see कि इसी सेशन में we were able to derive those learnings and implement those learnings in the past year paper asked in 2023. All right, guys. So we are coming to the end of this session. Just to add one thing, I'll be giving you homework in the Telegram group after this session ends. Fine. Max, latest by 9 a.m. tomorrow, you need to provide answers to those questions along with the reasonings behind your answers. And after the challenge ends, after the 5-day challenge ends, I'll be discussing those questions as well with you. Fine.